एलोय लैंडफॉल से वापस बेस पर आती है और गाया से मिलती है। गाया बताती है कि एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हेफेस्टस उसकी सोच से भी ज़्यादा वाइडर और पावरफुल हो चुका है। ओमेगा क्लियरेंस के साथ भी एलोय को 35 घंटे लगेंगे हेफेस्टस को गाया में मर्ज करने में। तो यार ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि पल्स जनरेटर के साथ हम लोग जीनत्स को इतनी देर तक बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, हमारे डिटेक्शन का रिस्क बढ़ता ही जाएगा। तब एलोय गाया से कहती है कि अगर डॉक्टर एलिजाबेथ सोबेक के दोनों क्लोन हेफेस्टस को मर्ज करने में हेल्प करें तो। तब गाया टाइम कैलकुलेट करके बताती है कि तब 35 घंटे की बजाय सिर्फ 4.5 घंटों में हेफेस्टस की मर्जिंग प्रोसेस पूरी हो जाएगी। 4.5 घंटे की बात सुनकर एलोय बेटा के पास जाती है, लेकिन बेटा एलोय के साथ जाने को साफ मना कर देती है, क्योंकि बेटा डरती है कि अगर गलती से भी जीनत्स वहां आ गए तो वो फिर से उसे उस जहन्नुम टॉर्चर से भरी लाइफ में वापस ले जाएंगे। इसलिए बेटा साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन एलोय हिम्मत नहीं हारती और आखिरकार बेटा को जिम्नाई कोल्ड्रॉन जाने को कन्विंस कर ही लेती है। लेकिन बेटा एलोय से एक वादा करने को कहती है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई और जीनत्स ने उनको ढूंढ लिया तो एलोय को बेटा को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि बेटा फिर से जीनत्स की गुलाम बनके नहीं जीना चाहती। तो एलोय कहती है आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। थोड़ी देर में सभी लोग साथ में अलग अलग कोल्ड्रॉन की और पल्स जनरेटर को लेकर जीनत्स को फेक एनर्जी जनरेट करके बेवकूफ़ बनाने निकल पड़ते हैं। एलोय बेटा और वार्ल जिम्नाई कोल्ड्रॉन पहुंचते हैं और गाया को एक डेटा कोर में फुल्ली इंस्टॉल करके एलोय सभी को पल्स जनरेटर यूज करने को कहती है। एलोय और बेटा दोनों ओमेगा क्लियरेंस कमांड से हेफेस्टस को मर्ज करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन हरामखोर हेफेस्टस डेटा कोर से निकलकर भाग जाता है और नेटवर्क में ही कहीं जाकर छिप जाता है। साथ ही कोल्ड्रॉन की सभी मशीनों को एग्रेसिव मोड में एलोय पर हमला करने को एक्टिवेट कर देता है। मशीनों को मारने के बाद एलोय नेटवर्क अपलिंक को ओवरराइड करके हेफेस्टस को फोर्सफुली वापस डेटा कोर में इंस्टॉल कर देती है और एक बार फिर एक खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है, जहां डॉक्टर एलिजाबेथ सोबेक के दोनों क्लोन हेफेस्टस को मैन्युअली ओरिजिनल कोड में कन्वर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ बेटा एलोय को एक मशीन सनविंग का ओवरराइड कोड भी गिफ्ट करती है। लेकिन गाइस, कोई भी अच्छा काम आसानी से पूरा कैसे हो सकता है। पता नहीं कैसे जीनत्स वहां आ जाते हैं और सबसे पहला वार वो एलोय पर ही करते हैं और एलोय जख्मी हो जाती है। जीनत्स का बॉस जिराड एरिक से बेटा को अपने कब्जे में लेने के लिए कहता है, तो वार्ल बेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और एरिक का मुकाबला करता है। लेकिन गाइस, तब इस स्टोरी में वो मोड आता है जिसको मैंने खुद दूर दूर तक एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। Now we're having fun, right? Finally. लेकिन दोस्तों, तभी न जाने क्यों जब एरिक एलोय को मारने की कोशिश करता है तो उन जीनत्स में से एक जीनत्स टिल्डा अपने साथियों के अगेंस्ट होकर एलोय को बचाकर वहां से लेकर भाग जाती है। पता नहीं क्यों। बाद में एलोय की आंख एक बेस पर खुलती है। अब आगे तो कैसे हो दोस्तों? हमारे बहुत अच्छे दोस्त वार्ल, जिसने हर लोकेशन पे हमारा साथ दिया, उसको जीनत्स द्वारा मार दिया गया है। जीनत्स में एक बंदा है एरिक नाम का, जिसने वार्ल को बहुत बुरी मौत मारा जब एलोय जख्मी थी। और वो जो जीनत उन्होंने बेटा प्लस गाया प्लस हेफेस्टस तीनों को अपने साथ ले गए हैं। लेकिन तभी उनके साथ में एक जो औरत थी टिल्डा, वो अचानक से टर्न कर जाती है उनके अगेंस्ट जीनत्स के और हमारे साथ आ जाती है।
तो हम अभी फिलहाल उसी की लोकेशन पे अलोय बेहोश हो जाती है उस टाइम पे, और हमें टिल्डा ने ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है। तो हमें बहुत से सवालों के जवाब उससे जानने हैं यार, कि उसने अचानक से टर्न क्यों लिया, वो क्यों जीनत के खिलाफ हो गई, और बेटा कहाँ है, गाया और हेफेस्टस भी। बहुत सारे सवाल हैं। वो ये Feeling better? इसी ने बचाया है एलोय को। How did you find us at the Cauldron? And what did you do to everyone right before I passed out? बहुत सारे सवाल पूछ रही है। All business, I see. Well, suffice it to say, we were keeping a very close eye on HEPHAESTUS, knowing we would need it at some point. Your ruse didn't fool us, and as for my little trick, it was an overload of the senses, accompanied by an energy discharge. Whoa. Gerard and Eric were only momentarily disoriented due to their shields, but it rendered you unconscious while I got you out. Perhaps some breakfast might steady you a bit? अलोय ने जैसे इससे पूछा कि तुमने हमें ट्रैक कैसे किया, तब टिल्डा कहती है कि तुम्हारी जो ट्रिक थी ना वो थोड़ी ओवर स्मार्ट वाली थी, और हमें तुरंत पता चल गया कि भाई तुम लोगों ने एनर्जी डिस्चार्ज करी चारों तरफ लोकेशन पे। One you recreated for Beta in the data channel you shared. How perceptive of you. Please, this way. तो इनको जो अलोय ने एक साजिश रची थी। Everything your people have done, you think I'm just gonna sit down and have a chat with you? Oh. They're not my people. They never were, and especially. कह रही वो मेरे साथ नहीं है जीनत, मतलब उनके अगेंस्ट हो गई है। Into space with them, and live with them for 1,000 years before coming back. So what made you suddenly turn on them? Quite simply. Okay, क्यों अगेंस्ट हुई ये? फोकस। ये तो अलोय का पुराना फोकस है जो हेडीज प्रूविंग लैब में इसने तोड़ दिया था। Incredible things. What you've accomplished in 2 decades of life. Okay, इसने इसका जो फोकस है रिपेयर करके इसकी सारी 1,000 years at my back and I haven't even come close. बचपन की ट्रेनिंग्स वगैरह सब देख लिया इसने कि अलोय किस तरह से बड़ी हुई, और इसने कितनी मुसीबतों का सामना करने के बाद। But I had to. In order to understand. To be enlightened. तो ये इम्प्रेस है अलोय के काम के तरीके से। You truly are. और Elizabeth's blood. पूरा एलिजाबेथ का ब्लड जो है वो इसके अंदर है। Her integrity. Watching all this shamed me for the company that I've kept. Having seen it all, I want is to help you. Even if it means stopping your friends? Especially so. Please. Sit down. ओके ठीक है यार, बैठ जाते हैं क्योंकि भाई साहब बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए हमें। पहले मैं बताता हूँ जो अभी बातें हुई कुछ। There. That's better. Now, we must recover Beta and Gaia at all costs. By now you must know that Gerard intends to use Gaia to reboot the Earth's biosphere. Remaking this world to specifications that would only suit us immortals. This process will kill every living thing on the planet. He calls it a clean install. A clean install? Not if I stop him first. Not if we do. And once he and the others are gone, we can work together to fulfill Elizabeth's dream. Okay. Of human knowledge. With that and Gaia, we could do everything Elizabeth wanted. Heal the biosphere, educate the people of this world, uplift them. Create the world she imagined. Let's not get ahead of ourselves. From what I've seen, your friends are invincible. I do wish you would stop calling them my friends. And they're not invincible. In fact, a friend of yours has found a way to defeat them. Wow. Silence. Oh, he's been a busy bee, building an army powerful enough to crash through Gerard's precious base.
Regala and her rebels. Even now, she's preparing a final march on the Tenakth capital. ओबे When she wins, she'll have the entire tribe under her control. शिट Hundreds of warriors and machines to throw at the base. She's been duped. They'll all perish, of course. But it should be enough to break Gerard's defenses and allow Silence to kill him. Along with all the others. Using the new weapon he's developed. Yes, ठीक he's है। found a way to circumvent our shields. Truly an exceptional man. He's planned for भाई everything. साहब बहुत कुछ चल रहा है Except you and me. You see, while his army is battering down Gerard's doors, you and I will sneak in through a back way, one that only I know about, while Silence and my friends are busy battling each other. We'll take back Beta and Gaia. ओके इसका प्लान पता चल गया ये क्या चाहती है I mean it. कि ये कैसे बचाएगी गाया को और बेटा को कैसे बचवाएगी मतलब हमारे थ्रू। तो गाइस बहुत सारे सवाल हैं, पहले तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर कर दूं। अलोय का ज़्यादा सोचना, ज़्यादा मतलब पल्स जनरेट कराना चारों कोल्ड्रोन से, ये सबसे बड़ा एक अलोय का एक गलत फहमी थी कि ये चकमा दे सकती है जीनस को, लेकिन जीनस को पता चल गया अलोय जिमिनाई कोल्ड्रोन में है, जहाँ से जीनस बेटा को और गाया को ले गए वार को मारकर। तो अलोय कहती है, ये जब इसको ब्रेकफास्ट के लिए बोलती है तो अलोय कहती है कि मैं तेरे साथ ब्रेकफास्ट करूँगी क्योंकि तेरे दोस्तों ने तो मेरे दोस्त को मार दिया है। तब ये कहती है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, वो मेरे दोस्त नहीं है, क्योंकि इसने जो टिल्डा है इसने अलोय का पुराना फोकस जो था उसको रिपेयर करके देखा कि अलोय ने तो भाई साहब बहुत अच्छे से मतलब जब बचपन से अब तक की जितनी भी इसकी कोशिशें थी, कैसे ये एलिजाबेथ सोबेक की तरह सोचती है और कितने अच्छे डिसीजन लेती है, उससे टिल्डा काफ़ी इंप्रेस हुई। तो ये उनके अगेंस्ट हो गई। अगेंस्ट क्यों हुई आई डोंट नो, वो हम जानेंगे। इसने एक चीज़ और बताई कि जो रिगाला और जो साइलेंस है, सबसे पहले साइलेंस जो है उसने इनकी शील्ड को बाईपास करने का तरीका ढूंढ लिया है, हमारा शक सही निकला। दूसरा, साइलेंस और रिगाला हमला करने वाले हैं टिनाक्थ पर, और टिनाक्थ पर हमला करने के बाद जब रिगाला के अंडर में सारा टिनाक्थ आ जाएगा तो वो हमला करेंगे जिराड के ऊपर। जिराड जीनत्स का लीडर है, और तब जब रिगाला टिनाक्थ के साथ और साइलेंस उस पर हमला करेंगे तो साइलेंस जिराड को मार देगा। तो ये, और जब वो उसको मार रहा होगा ना तब टिल्डा मदद करेगी अलोय की गाया और बेटा को निकालने में वहाँ से। तो ये प्लान है इनका। तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन पूछने हमने बेटा, जैसे बेटा के बारे में। You said Beta is not in urgent danger, so what are the Zeniths doing to her? Putting her to work. Merging Hephaestus with Gaia. ओ A difficult, time-consuming task, as I'm sure you know. They will compel her if need be. But her life is not in danger. She's the only one who can do it. Because you people made her to be nothing but a tool. Gerard's idea, not mine. भाई साहब They always viewed me with suspicion when I attempted any form of kindness towards her. That's why I created the data channel. A virtual place where we could speak in peace. जब अलोय पूछती है कि बेटा कहाँ है, मतलब क्या कर रहे होंगे उसके साथ, तो ये बताती है कि उसको काम पे लगा दिया गया होगा, उसको काम दिया गया होगा गाया को और हेफेस्टस को मर्ज करने का। और अगर आपको याद हो तो गाया ने बताया था कि अगर एक बंदा हेफेस्टस को गाया के अंदर मर्ज कर रहा है तो 18 घंटे लगेंगे। तो उसका कुछ नहीं कर सकते, ना उसको मार सकते अभी, क्योंकि जब तक गाया के अंदर हेफेस्टस मर्ज नहीं होगा तब तक वो लोग उसको मारेंगे नहीं, जिसमें टाइम लगेगा 18 घंटे। और जो टिल्डा है वो डेटा चैनल के थ्रू बात करती थी, तो पूछते हैं डेटा चैनल क्या है। So this channel you shared with Beta, none of the other Zeniths ever found out about it. Gerard believes he's the most cunning of all of us. Even after 1,000 years, he still can't imagine that I would outwit him. The channel allowed me to interact with Beta away from their mistrustful eyes. It offered us a chance to be ourselves. Until you cut off all contact. Yes, though it pained me. I was worried that our meetings would do her more harm than good. She felt like you tossed her aside. I was afraid the others would find out and punish her. She may not have had the comforts of friendship anymore, but at least I ensured she was safe. I know it seems harsh, but you must believe that her well-being has always been paramount to me.
ओके, डेटा चैनल के बारे में जब पूछती है अलोय कि क्या किसी जिनस को पता नहीं चला क्या डेटा चैनल के थ्रू तुम बेटा से बात करती हो, तब टिल्डा कहती है कि नहीं, किसी को नहीं पता चला, लेकिन जब शक की सुई घूमने लगी तब इसने बेटा से बात करना बंद कर दिया, इसीलिए कि बात करने से ज़्यादा ज़रूरी है बेटा की सेफ्टी। ठीक है, इस जगह के बारे में, जो ये फ़िलहाल जगह है, इसके बारे में पूछते हैं। Why did you make the data channel look like this place? I built this house as a shelter to weather any storm. A safe place. Not just for me, but for the art stored below. ये इसका घर है, ये जो जगह है। Cultural artifacts of incalculable value. Truly some of the greatest achievements of human civilization. And you wanted Beta to see them? Yes. Her upbringing was so cold and technical. I thought if she could experience Vermeer and Rembrandt, it would bring something else into her life. A heritage every bit as valuable as the scientific and technical data being drummed into her. I'm sorry I had to cut off contact, but I'll never regret sharing this house with her. She needed its shelter even more than I did. ओके गाइज, ये जो घर है ये टिल्डा का है, ये इसने एज ए शेल्टर की तरह बनाया था, और बेटा से ये इसी घर को, मतलब इसी घर में बात करती थी बेटा से, बेटा को यही घर दिखाई देता था, और अभी पता नहीं यार बेटा किस साल में होगी। ठीक है, जीनस के प्लान के बारे में पूछते हैं। Beta told me your colony was destroyed. That you came back to Earth because you had nowhere else to go. It's true. After we reached our destination, a planet in the Sirius star system, we spent decades building a new home. The physical constraints of Earth, the boundaries of mortality, gone. To think of what we could have done with it. It might have been a utopia. Instead, we stagnated, absorbed in effortless comforts and virtual realities. It took a cataclysm to finally yank us out of our stupor. What happened? A massive geological event. We knew of instabilities in the planet core, but we underestimated them. By the time the collapse was upon us, it was too late to stop it. Only a few of us made it to the ship in time. We set course for Earth, the only safe harbor left to us. Which you decided to make unsafe for anyone else. Not me. Gerard. Gerard. He believes it's better to wipe the canvas clean than work around the smudges. No more primitive tribes, no more combat machines, only a blank slate to do with as he pleases. But we will stop him. All we have to do is get into that base. ओके, जीनस का जो प्लान था, वो जब अपने घर पहुंचे तो वहाँ पे किसी डिज़ास्टर के चलते हुए कोई चीज़ कोलैप्स हुई, जिस वजह से, और जब तक वो समझ पाते वो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। इनमें से कुछ ही लोग शिप में सवार होकर धरती पर आ गए और वो प्लैनेट हो गया तबाह, जिस वजह से अब ये लोग यहाँ चाहते हैं कि कोई भी ट्राइब्स नहीं होना चाहिए, कबीला कोई नहीं होना चाहिए, कोई भी मशीन नहीं होनी चाहिए, सबको मिटा के एक प्रॉपर क्लीन इंस्टॉल लाइफ का किया जाए अर्थ पर। तो ये जेरार्ड का प्लान है। हमें उसको टिल्डा कहती है हम उसको रोकेंगे। ठीक है, तो बेस कहाँ है इसका? What exactly is your plan to sneak into the Zenith base? We will make use of a lesson I learned from an early age. Always know your exits. In this case, a place where Gerard's new construction meets the ancient foundation, a passage that only I can access. When Silence flings his army at the base, we will enter through this back door, bypassing most of the fighting. The distraction will provide us with a window in which to rescue Beta and Gaia. इसने बेस के नक्शे में एक सीक्रेट एंट्रेंस दिखाया है जो एज ए एग्जिट का भी काम करेगा, जहाँ से हम बेटा को बचाएंगे, मतलब अंदर घुसेंगे इनके बेस में और बाहर निकल आएंगे बेटा को बचाकर। बेटा की लोकेशन कहाँ है? Once we're inside the base, where will we find Beta and Gaia? Here in the command center. ओबे By then, Gaia will have ऊपर है। been reunited with all ये its टावर में ऊपर दिखाई दे रही है। functions, including Hephaestus. What about the alpha build of Apollo on your ship? A simple matter of recovery once the others have been dealt with. With that in hand, we'll have everything we need to make this world as it should be. ओके, तो बेटा की लोकेशन भी पता चल गई है।
अभी पूछता हूँ अपने, अब हम पूछेंगे अपने फोकस के बारे में कि इसने उसको रिपेयर कैसे किया और इसको कैसे मिला. My old focus. How did you find it, let alone repair it? When we encountered you at the Hades Proving Lab, Gerard saw you as a redundancy. I knew better. You were a revelation. After your dramatic escape, bravo, by the way. Gerard and Eric assumed you were dead and gave up the hunt. I wasn't so sure. When the others were busy, I returned to the lab and searched for any trace of you. That's when I found this little treasure. Not easy to repair, but certainly worth the effort. As I watched your life unfold, you were like a splash of color on a worn canvas. What Liz was, and more. Did you show it to the others? Oh. Of course not. It was your actions that inspired me to defy them. It's worth noting that if I hadn't found it and watched its contents, I wouldn't have known to save you at the Cauldron. You'd be dead. So I should be grateful? If you like. ओके, तो जब हेडिस प्रूविंग लैब में एलोय पर हमला किया जा रहा था तब उन लोगों को लगा कि एलोय मर गई उसमें जो हमले में, लेकिन ये टिल्डा वापस आई उसी प्रूविंग लैब में और इसने इस एलोय के कुछ भी ट्रेस करने के लिए चीज़ें ढूंढना शुरू किया कि कुछ तो सुराग मिल जाए इसका एलोय का. तब इसको टूटा हुआ ये जो फोकस था जब एलोय ने तोड़ दिया था कि साइलेंस मुझ पे स्पाई रख रहा है, मतलब साइलेंस ने तो दिया था ना ये इस जो फोकस था, तब ये टूटा हुआ फोकस इसको मिला और इसने इसकी लाइफ को अनफोल्ड किया, मतलब पूरी लाइफ देख ली इसने. और टिल्डा बहुत इम्प्रेस हुई कि एलोय बचपन से लेकर अब तक कितना, मतलब इसका डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल एलिजाबेथ सोबेक है, सोबेक के जैसी है, मतलब उसी का खून है, प्योर खून है एलोय के अंदर एलिजाबेथ सोबेक का. तो ये काफ़ी इंप्रेस हो गई. एलोय पूछती है तुमने ये चीज़ किसी को दिखाई तो नहीं, तो ये मना कर देती है. ठीक है, इसके बारे में पूछते हैं. So you know all about me. What about What you? about you? What would you like to know? Well, start with your life on Earth. धरती से When I शुरू करो. was 8, terrorists flooded my home city. जब ये 8 साल की थी तो टेररिस्ट ने इसकी शहर को तबाह कर दिया. I was one of the few who survived. My guardian sent me to boarding school. इसको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया. Among my peers, I was the strange girl, the orphan to be avoided. All because of circumstances beyond my control. इसके मम्मी पापा भी डेड हो गए थे इस टिल्डा के बचपन में. Huh? Aren't we? You were an outcast. But you didn't let that stop you from getting what you needed. Neither did I. I climbed my way out of desolation and used my wits to build a fortune. First from the technical analysis of art and the detection of forgeries. Profitable expertise in those days. But as it turned out, the software I developed was even more useful for counterintelligence. From there, it was only a short step to gathering extremely valuable intelligence on my own. You were a spy? More like a service one could turn to for information. I had to remain anonymous, of course, to protect my privacy. But despite that anonymity, Far Zenith inevitably sought me out. गाइस, इसके बचपन में मम्मी पापा की डेथ हो गई थी जब टेररिस्ट अटैक किया गया था, जब ये 8 साल की थी टिल्डा. लेकिन बाद में जब इसको बोर्डिंग स्कूल वगैरह में जैसे भेज दिया गया तो इसने एक अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करके टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छी महारत हासिल कर ली और इसने बहुत अच्छे जो भी एक टेक्नोलॉजी थी उसको डेवलप किया और जीनत की नज़र इस पर पड़ गई. ठीक है, जब ज्वाइन किया इसने जीनत को तब पूछते हैं. What happened when Far Zenith approached you? They painted an irresistible vision of humanity's future. One where we need not fear illness or death, where we explored the furthest reaches of the stars and thrived. It was only later that I realized that they only intended to bequeath this future to the rich and powerful. By the time I finally figured it out, the walls were closing in, Pharaoh's machines were devouring the earth. So I accepted Far Zenith's invitation to a birth on the Odyssey. I wanted Liz to come, but she had nobler plans, as you well know.
ओके, तो जब इसने फार जीनत को ज्वाइन किया तो फारो की मशीन जो थी वो धरती को, मतलब जो फ़ैरो ने जो मशीन बनाई थी वो धरती को इधर उधर कर रही थी, और तब इसने फार जीनत का जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये चाहती थी कि एलिजाबेथ सोबेक भी इसके साथ ओडेसी शिप में आए, लेकिन उसके बहुत सारे कुछ एलिजाबेथ सोबेक के कुछ और भी प्लान्स थे जो वो नहीं आई, लेकिन ये चली गई थी। बाकी के जीनत्स के बारे में पूछते हैं। So you didn't know the other Zeniths were monsters until it was too late? I knew some of them were. Certainly. It wasn't until we were off planet that I understood the true scope of their greed. I was grateful to simply be alive, but the others became obsessed with a kind of effortless immortality. They built a colony where machines serviced their every need, where any memory or fantasy could be endlessly savored in virtual reality. It wasn't life. It was stultifying, a pampered dream state. As the decades passed, I withdrew more and more, alone yet again, but this time with eons to consider my mistakes. Now finally, having met you, I feel like I have a second chance. To do what? Help you, of course. To fulfill Liz's dream, which isn't so different from Farzenith's original vision. A better future for humanity. How do you know about Silence's plan? He isn't the only one adept at spyware. You hacked his focus? ओ भाई साहब, No, he's too careful for that. But his subordinates? Not so much. He gave additional focuses to the tribals he branded the Sons of Prometheus. By tapping them, I learned about most of his dealings. The distribution of override technology, the arming of Tanakh rebels, and the secret pact with Regala to attack Gerard's base. But how did he come up with a weapon that can take down your shields? That's the one thing I haven't been able to figure out, but however he did it, I'm quite certain it will work. With it and the Tanakh army, victory seems to be within his grasp. Such a shame he'll be disappointed. ओके, जब ये एलोय साइलेंस के बारे में पूछती है इससे कि तुम्हें साइलेंस के बारे में कैसे पता चला, तो ये कहती है कि मैंने साइलेंस के जो एलाइज है ना, उनके फोकस को हैक कर रखा है किया, और उसकी डीलिंग्स वगैरह, रिगाला से वो क्या बात करता है, वे सारी मुझे पता है। लेकिन जब एलोय पूछती है कि भाई चलो तुम्हें ये सब तो पता है, लेकिन उसने वो वेपन कैसे बनाया जिसने तुम्हारी शील्ड को डिसेबल कर देता है, जिस वेपन से वो तुम्हारी शील्ड को डिसेबल कर देता है, तो अब ये टिल्डा कहती है ये चीज़ तो मुझे भी आज तक समझ नहीं आई कि उसने वो वेपन बना कैसे लिया। Regala's only interested in killing Hepharo and waging war on the Karja. What does she have to gain by attacking Zeniths? It's the price she must pay for her war. Without the ability to override machines, her little rebellion would have languished in the desert. So she trades with the Sons of Prometheus. Machines to help her overthrow Hepharo. In exchange for an assault on the base. Pride has deluded her into thinking she can actually survive such a battle. And all without ever knowing who the Sons of Prometheus really answer to. Yet for all of Silence's brilliance, still he underestimates you. That blind spot is what will allow us to take Beta and Gaia right out from under him. While hundreds of Tanakh are cut down outside. ओके, टिनाक पर रिगाला हमला करने वाली है, तो उसके पीछे भी साइलेंस ही है। ये साइलेंस का ही प्लान है कि रिगाला टिनाक पर हमला करके फिर सारे टिनाक मिलके जीनस पर हमला करें। ओके, एलिजाबेथ सोबेक के बारे में पूछ लेते हैं। So you knew Elizabeth. What was she like? Liz was everything she was. I see in you. And more. Your ingenuity, your determination, your moral compass. You've managed to distill her greatest qualities and make them your own. I'm not asking about me. Tell me about Elizabeth. What was she really like? The honest answer is that I don't actually know.
For all the time that I spent with her, she always kept a part of herself locked away. It was like that from the moment we met. ओके, इसको ज़्यादा एलिजाबेथ सोबेक के बारे में नहीं पता। कैसे मिली एलिजाबेथ सोबेक से टिल्डा? So when you met Elizabeth, she was what? Distant? Aloof? Not aloof. Not exactly. It was a summit in Paris about machine learning, a touchy subject in those days, because regulatory authorities were just starting to clamp down on AIs. Liz gave the keynote address. She had already achieved great renown for her work in automated environmental reclamation. But in her address, she was just starting to imagine the next step. An AI-driven system that wouldn't just act on its programming, but actually take responsibility for its sphere of influence. To care about life. Not just follow orders. Revolutionary stuff. I was fascinated. And I wanted to meet her for a long time. I watched her after her talk. She had spoken with such moral authority, such empathy. But after that, she retreated. I could tell she felt uncomfortable with all of her admirers. It was as if giving the talk had cost her something. I didn't want to be a pest, so I planned my approach carefully. Okay. टिल्डा एलिजाबेथ सोबेक से पेरिस में एक सबमिट थी मशीन लर्निंग के ऊपर। वहाँ पे जब वो लेक्चर देने आई थी तब टिल्डा फर्स्ट टाइम एलिजाबेथ सोबेक से मिली, और जब वो अपनी लेक्चर मतलब कंटिन्यू दे रही थी उस टाइम पे टिल्डा ने कुछ अप्रोच किया, सब बड़ी सावधानी पूर्वक। क्या था वो अप्रोच? So how did you finally approach Elizabeth after her talk? I picked the right moment. The morning of the next day, right as she came back to the conference, she had just had her coffee. She was fresh, rested. It was like she had braced herself for the onslaught of colleagues. I asked if I could walk with her, then put forth a question about her talk that I thought was intelligent. Her answer made me realize it wasn't, but she was very welcoming, almost as if we were previously acquainted. It was only halfway through the conversation that I realized she knew exactly who I was. It was quite a shock to me. My business was trafficking in secrets, and I took great pains to protect my anonymity. So that was Liz, perpetually one step ahead. I came to view our meeting as a metaphor for our friendship. She always seemed to know me far better than I knew her. Wow. I guess I know the feeling. तो इसने अप्रोच ऐसे की कि जब अगले दिन जब एलिजाबेथ सोबेक सबमिट में मीटिंग में वापस आई, उस कॉन्फ्रेंस में जब वो कॉफ़ी पी रही थी कॉफ़ी शॉप पे, तब इसने एलिजाबेथ सोबेक से बात करने की कोशिश की। टिल्डा ने, एलिजाबेथ सोबेक इतनी स्मार्ट थी, उसने टिल्डा को फर्स्ट क्वेश्चन में ही पहचान लिया कि ये टिल्डा किस वजह से इससे बात कर रही है। और टिल्डा जो अपनी आइडेंटिटी को हमेशा छिपाए रखती थी, एलिजाबेथ सोबेक ने उसको एक झटके में पहचान लिया, जिससे टिल्डा एलिजाबेथ सोबेक से काफ़ी इम्प्रेस हो गई। तो ऐसी थी इनकी फ़र्स्ट मुलाकात। तो अभी हमें बात करनी है रिगाला और साइलेंस के जो हमला हो रहा है, जो टिनाक्स पे जो हमला करने वाले हैं उसके बारे में, कि कोई ना कोई दूसरा रास्ता हो सकता है। क्या रास्ता होगा वो देखते हैं। पहले वार गया, अब हिकारो जाएगा, अब टिनाक्स जाएगा। Your plan would wipe out an entire tribe. अलोय कह रही है तेरे प्लान में ना बेकार है सारी चीजें, There has to be another way. क्योंकि पूरा कबीला तबाह हो जाएगा। We are in an admittedly desperate situation, but I assure you there isn't. Remember Zero Dawn. Elizabeth's sacrifice. Sometimes many have to die for a new world to grow. क्या तरीका हो सकता है? मतलब कोई मरे बिना हमला भी ना हो पाए। Wait. The data channel.
It still exists, doesn't it? Aloy डेटा चैनल के बारे में कह रही है। Open it. Let me talk to Beta. कहती है मुझे बेटा से बात कराओ मेरी। Impossible. We might be detected. It's worth the risk. There is another way, one where the Tanakh survive. But we won't. If the others... If you want to help, open it. Aloy जबरदस्ती कहती है खोल इसको। तुझे हेल्प चाहिए ना? तो ठीक है, डेटा चैनल ओपन हो गया है। हमें बेटा से बात करनी है। कहाँ है बेटा? Where is she? ओह माय गॉड, इसको टॉर्चर किया जा रहा है। What are they doing to her? Virtual reality dissociation. The manual merge of HEPHAESTUS will take hours upon hours of tedious micromanagement. Okay, वो लोग manually. If she resists the work, they run simulations to induce feelings of isolation and manually वो लोग HEPHAESTUS को मर्ज करा रहे हैं गाया में, इसकी मतलब मर्जी के खिलाफ। You're alive. They're watching me. I can't hold up this extra projection for long. वो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन। You should have killed me. वो बेटा कह रही है कि तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था। No, look at me. I'm coming for you. I promise. Okay. I just need you to hold out a little while longer and work on the merge. अलोय कुछ बात कर रही है उसके कान में जो सुनाई नहीं दे रहा है। Then I think it can be done. I'll contact again when it's time. Can you hold on? As long as I know you're coming for me, I can endure anything. वो गई। ठीक है गाइस, बेटा को बोल दिया इसने कि मैं आ रही हूँ तुझे बचाने के लिए, लेकिन कान में कुछ बोला उसके। क्या? All right. I did as you asked. Now I think you need to tell me what you're planning. I'm going to take Silent's army away. I don't need it. Okay. Only the weapon he made to penetrate your shields. And how do you propose to get it? Ask him nicely? Without Regala and her rebels, he won't have a choice. Okay. We'll be his only option. Only option for what? What did you tell her? That is between me and my sister. Oh my God. सही जवाब दिया इसको। Will be Silent's only option for crashing that base. I'll tell you the rest later. But first, there are a couple of things I have to do. Oh. And what are those? Lay my friend to rest. And then I'm going to use the override that Beta gave me at GEMINI to put an end to Regala's rebellion. From the air. Wait. Since you insist on doing things your way, I know of something that will truly help you make a grand entrance with the Tanakh. Okay, guys, ये metal devil है। The ancient Horus Titans still possess electromagnetic energy cells as part of their arsenal. Drop one of those on Regala's army and they'll receive quite a surprise. Wow, ये प्लान अच्छा है। इससे रिगाला की आर्मी भी खत्म हो जाएगी। I'll come to your base if you manage to bring silence to the table. Not if. When. तो गाइस प्लान ये है कि साइलेंस के पास अगर रिगाला की आर्मी नहीं होगी, Erend, are you there? तो हम लोग उसको कन्विंस कर सकते हैं। Aloy, is that really you? Yeah, it's me. Where's everyone else? We're all... We're back at base. What happened? It might be easier to explain in person. I'll try to join you there when I can. Okay. We'll wait here for you. It's good to hear your voice, Aloy. ओके गाइज, एरेंड वगैरह सब पहुंच चुके हैं, हमारे दोस्त वगैरह सब पहुंच चुके हैं अपने बेस पर। तो अलोय का प्लान ये है कि अगर साइलेंस के पास रिगाला की आर्मी नहीं रहेगी
तब साइलेंस सरेंडर कर देगा और वो बता भी देगा हमें कि उसका वेपन कहाँ, कौन सा वेपन उसने डेवलप किया हुआ है। यहाँ से डायरेक्ट जंप करना इज़ नॉट ए गुड आइडिया। भाई साहब नीचे देख रहे हो 2-3 ये खींचने वाले राक्षस घूम रहे हैं, इसकी भैंस की पूंछ। तो अपन लोग एक काम करते हैं, जंप करते हैं। Just to let you know, I'm now patched into your focus network. Right. I take it the other Zeniths can't hear us? Whoa. Of course not. And they don't know about your base either, in case you were wondering. I sent you data on the Horus energy cells you can use against Regala's forces. Reach out to me when you're ready to acquire one. ये ले। Understood. ये भी ले। गाइस एक गया, रुक जाओ, मैं इस पे, अबे बेटी हरामखोर। गया। ओ बोला था ना, मैंने बोला था ये मत। ओ बावली रुक जा, गया ये यार पिछवाड़े पे तीनों मार दिए। ओके, तो रिगाला की आर्मी के ऊपर हम लोग मतलब जो मेटल डेविल है उसके ऊपर एक एनर्जी सेल है। अगर हम उस एनर्जी सेल को मशीनों के आसपास गिराते हैं ना या लेके जाते हैं तो रिगाला की आर्मी डाउन हो जाएगी बिल्कुल, और यही प्लान है। तो आपको याद हो, अगर जिमनाई कोल्ड्रोन में हमें बेटा ने एक सनविंग का होलोग्राफिकल कुछ डेटा दिया था, तो इट मीन्स अलोय फिलहाल सनविंग को ओवरराइड कर सकती है। शिट, बंदर, अबे बंदर आ गए। वेट, वेट, स्टैमिना खत्म। भाई साहब बहुत सारे बंदर हैं। अबे रुक, अबे ये कहां से आ गया? आ जा, स्टैमिना नहीं है, मुझे एक ब्लास्ट करना है। किसके ऊपर? नहीं, यहां से हमला नहीं हो पा रहा है। तेरी तो एक गया। अबे पिटी, अबे मट्टी फेंक रहा, ये दो है। नाउ गया तू। ओ भाई साहब, क्या हेल्थ गई। ये पीछे का हिस्सा, अबे हट जा आगे से।
एक डैमेज हुआ। अबे बंदर रुक। ये गया। मिट्टी। रुक। कहाँ है वो बंदर? गया बंदर गया। उसमें एक और ब्लास्ट करना है मेरे को। आजा भाई तू भी आ। ये आ रहा ये रहा। इसको लूटा लाटी कर ली जाए। ये आ रहा है। इसके पेट के बीच में मारेंगे। कम ऑन डार्लिंग। My God. अबे मट्टी मत फेंक। इसके आग लगानी है इसमें। कम ऑन साइड में घूम। अबे ब्लास्ट नहीं हुआ। ये फटेगा। मेरे हिसाब से एक बंदर बचा है। आजा भाई बंदर, तेरी भी बारी है। किधर है तू? ओ अबे वो तीनों फिर जिंदा हो गए। अभी तो मार के आया था मैं उनको। कोई बात नहीं, छोड़ो यार। बेस पे चलेंगे। फास्ट ट्रेवल कर लेते हैं थोड़ा जल्दी। यार वाल की खबर जब मैं उसको दूंगा ना, वो जो जो को, तो वो तो बहुत परेशान हो जाएगी। अरे यार वाल को नहीं जाना चाहिए था। भिड़ गया वो भी अकेला। ठीक है मैं बेस पर पहुंच रहा हूं। गाइस आपको याद है यहाँ पे हमें गाया भी मिलती थी, लेकिन इस बार गाया भी नहीं है और बेटा प्लस वार्ल तीनों में से कोई भी नहीं है। वार्ल तो डेड हो चुका है बेचारा। ये हमारे दोस्त यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। कोटालो, जो, एरंड और एल्वा यही बचे हैं। When you're wounded, you have to strike back. Draw blood. Hey, can't I get one damn minute to mourn my friend? Okay, इनको पता चल गया है। Slaughter my tribe to overthrow Hikaru. The Zeniths have Beta and Gaia. We can't sit around wallowing in our losses. Kotalo's right.
We must fight. कोटालो अभी भी हिम्मत दे रहा है इनको. So what are you gonna do, huh? Take on all of Regala's rebels? Not to mention the Zeniths. What can we even do? Throw ourselves at their base? Something like that. So... जो का बॉयफ्रेंड था वार, अब वो नहीं रहा. After we lost contact with you, we regrouped and went to GEMINI. What happened? The recording we found on Varl's focus cut off when that Zenith Eric... The Zeniths were tracking Hephaestus. Whoa. When Gaia trapped it in Gemini, they knew where we were. After Varl tried to stop them. They took Beta and Gaia. I only survived because one of the Zeniths turned against the others to save me. One of them? Well... At least we didn't lose you too. So what do we do now? Okay, पता है? We're going to defeat the Zeniths. इनको... And get Beta and Gaia back. But first... We are going to stop Regala. Okay, Regala को रोकने जा रहे हैं. सबसे पहला काम ये होगा. Back in Gemini, Beta gave me a gift. There's something I need to do first to make it work, but it could put an end to the bloodshed. Word is, Regala's readying her army for an all-out assault on the Grove. I need to be there. ये बंदा वापस जा रहा है हिकारो के पास में. Go. Stand with Hikaru. And keep an eye on the sky. Okay, Aloy कहती है आसमान में नजर रखना और हिकारो के साथ खड़े रहना. The rest of you, whatever preparations you need to make, upgrades, resupplies, get on it. It won't be long before we take the fight to the Zeniths. We'll be ready, Aloy. And when you're ready, meet me outside the east exit. I'd like to have a word in private. जो बेस के बाहर जा रही है, कह रही है मुझे तुझसे अकेले में कुछ बात करनी है. Darkest, you're the flame that lights the way forward. Just tell me one thing. Am I gonna get to smash up a bunch of Zenith bastards? We all are. Good. तो गाइस इन लोगों को पता ऐसे चला कि वार मर चुका है. जब फोकस से कांटेक्ट टूट गया था ना, अलोय पे हमला हुआ था जिमनाई में, तब ये लोग सारे इकट्ठा होके जिमनाई कोल्ड्रोन में गए थे. उस टाइम अलोय को वो बचा के ले गई थी टिल्डा, लेकिन वहाँ पे जब इन्हें वार्ल, इन लोगों को, हमारे जो दोस्त हैं ये लोग जो यहाँ बेस पे हैं, इनको वार्ल की वहाँ डेड बॉडी मिली और उसके फोकस से सारी रिकॉर्डिंग मिल गई कि एक्चुअल में हुआ क्या था. तो इनको ऐसे पता चला था. और ये लोग अभी फ़िलहाल रिगाला को रोकने जा रहे हैं क्योंकि रिगाला टिनाक्ट टेरिटरी पे हमला कर रही है. ठीक है, मुझे जो से बात करनी है, वो कह के गई है मुझसे कि मुझसे प्राइवेट में आके बात करना. लेकिन मैं एक बार ओवरराइड वाले चैम्बर में जाना चाहता हूँ. ये नहीं है. ओके, ये देख लेते हैं यार एक बार. It's all going to be okay. इस तरफ. ओके, मैं क्या क्राफ्ट कर सकता हूँ? बस अपग्रेड देख लेते हैं यार, फिर हम लोग जो से बात करेंगे. वेपन अपग्रेड आ रखे हैं. ये कौन सा बो है? हंटर बो. वो ओके. 45102. ये वाला
ठीक है, बात करते हैं जो से। जो उस तरफ। ओके, बेस के बाहर आ गया हूँ।